Decolonizing the Museum, Initial Repatriation of the Guideliu Collection from UK to India, that is DMUSE. DMUSE is a 4-year research project involving Dr. Arkotong Longkumar from University of Edinburgh as principal investigator, Professor Claire Harris, University of Oxford as co-investigator, Dr. Gaurav Rajkova, University of Edinburgh as postdoctoral fellow, and numerous partners in the UK and India. Guideliu, born on 1915 and died on 1993, a Zilingrong Naga, was 16-year-old when she instigated an uprising against the British. Between 1929 and 1932, in the present Indian regions of Assam, Nagaland, and Manipur. In their efforts to put down the rebellion, the British launched massive military operations in the Zilingrong areas in search of Jadanong and Guideliu, the leaders of the rebellion, while Jadanong was arrested and executed in 1931. Guideliu was eventually arrested in 1932. During these military raids, the British confiscated her notebooks, clothing, ornaments, and various ritual objects. The British forces also destroyed Heraka temples in places such as Kambiran. A number of objects were also taken from these temples. These artifacts collected by various British officers during military expeditions were donated to the Pitts River Museum, Oxford, and are now known as the Guideliu's collection. This exhibition represents digital prints of the objects in the collection. The DMUSE project focuses on how digital technologies may be used to bring these museum objects closer to communities. By involving multiple stakeholders, the project will encourage discussion within the community about the digital repatriation of museum objects, their ownership, and the production of knowledge about them. At the same time, the project will contribute to international debates about the indigenous traditional knowledge and the protection of indigenous intellectual property rights. The project will raise important questions about whether and how such collections and museums that should be returned to the indigenous people from where they were taken. This project is funded by the Arts and Humanities Research Council, AHRC, and involves the Universities of Edinburgh and Oxford and the Pitt Rivers Museum, Oxford. Talking to the media, Dr. Gaurav Rajkova, University of Edinburgh, explained the importance of the project. Also through a website sharing the collections on the community members on WhatsApp, video, film, exhibition, and various publications. They will disseminate our project, finding to a wide audience in India and the UK. तो ये एक हम छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये इसमें इन्वॉल्व है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और पिट रिवर्स म्यूज़ियम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और लोकल कम्युनिटी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट में हम करना चाहते हैं कि पिट रिवर्स म्यूज़ियम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो रानी गाइडेलिउ का बहुत कुछ पुराना हिस्टोरिकल सामान वहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है, उसका डिजिटल कॉपी बना के हम यहाँ कम्युनिटी के बीच में लाना चाह रहे हैं। हमारा बेसिक मकसद यही है कि ये जो पुराना सामान है रानी माँ का, वो कम्युनिटी को देखने को मिले और आज के दिन में उनके सामने देखने को मिले। ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट इस साल की शुरुआत में ही शुरू हुआ है, तो ये 4 साल का प्रोजेक्ट है। अभी तो शुरुआत के स्टेज में ही हम फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है ये कम्युनिटी के साथ अलग अलग वर्कशॉप्स के ज़रिए से। तो इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। हम पिछले 1 हफ्ते से कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिले हैं यहाँ पे, अलग अलग विमेंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी के एल्डर्स से भी, बुजुर्ग लोगों से भी मिले हैं, और उन लोग को ये चीज़ें देख के बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है और उनसे हम लोग को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है इन चीज़ों के बारे में, जिसका इन्फॉर्मेशन बहुत पुराना है और ये म्यूज़ियम में बहुत तरीके से है भी नहीं, तो उस तरह से हमें भी बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जब लखीमपुर से होके आ रहा था, भवन पार होके, बोला कि ये कौन लड़का हमको प्रणाम भी नहीं करता है, तो बोला अरे आप कौन है ऐसा जादू नाम का, तो दोनों में मुखामुखी हो गया।
तो आपको अगर डिसरेस्पेक्ट अगर आप वो करते हैं तो आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। नहीं, आप मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। दोनों में ऐसा लगा नबी हो गया। तो उसके बाद आर्मी ऑपरेशन लगा के इसका मंदिर को जला दिया। ये ठीक है। ये दोनों मूर्ति है ना, ये पूजा करना चाहिए। तो ये मूर्ति ऐसा है, जगन्नाथ को विष्णु भगवान और उनका जो मिसेस है जिस रूप में दर्शन दिया वही रूप में हाँ वही रूप उसका मूर्ति बना के उसका मंदिर में रखा था। ये 1931 में। Decolonizing the museum. Initial repatriation of the Guadeloupe collection from UK to India, that is DMUSE. DMUSE is a 4-year research project